I welcome you all in the next video tutorial of HP Board of Departmental Examination Paper 1 Financial Administration. In this video, we are going to cover yet another previously asked question, and this question was asked in October 2015. And the question was, write a note on extraordinary leave. So what is this kind of extraordinary leave? Let's see from HP leave rules. As you can see, this is the official document, leave rules of Himachal Pradesh. And extraordinary leave is granted to the government servant when other kinds of leave are not due and admissible. जब सभी की सभी लीव्स खत्म हो जाए या एडमिसिबल ना हो, उस समय पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव देकर किसी भी कर्मचारी की सर्विस को प्रोटेक्ट किया जा सकता है. Second point, other kinds may be due and admissible, but the government servant specifically request for the grant of this kind of leave. अगर कोई सरकारी कर्मचारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की स्पेशल डिमांड कर दे कि मुझे सिर्फ ईओएल ही चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ही चाहिए, तब बाकी छुट्टियों के होते हुए भी उसे केवल ईओएल ही प्रदान की जाएगी. It must be clear in our mind that extraordinary leave can be granted on the request of the government servant, even when other kinds of leave are admissible to him. So, what are the different rules for grantment? So when it is not granted, कब EOL नहीं दी जाएगी? There is a provision in the CCS pension rule 1972 that government servant can seek voluntary retirements after certain length of service specified in those rules. So fundamental rules also contain a provision for voluntary retirement by the government servant on attaining the age as specified in the rules. And there are different rules also provide for the voluntary retirements by the government servant. And there is one provision which is common in all these rules on voluntary retirement, and that is the government servant who want to seek retirement before they attain the age of superannuation are required to give 3 month notice to the government of their intention. 3 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा अगर आपकी कोई इंटेंशन है, प्री मिच्योर रिटायरमेंट अगर आप लेना चाह रहे हैं, वॉलंटियर रिटायरमेंट आप लेना चाह रहे हैं, तब आपको 3 महीने 3 माह पूर्व एक नोटिस सरकार को देना पड़ेगा. And during the period of such notice, they can apply for the grant of the leave due and admissible. However, leave rule specifically grant, it exclude the grant of extraordinary leave ड्यूरिंग सच नोटिस पीरियड. लेकिन उस नोटिस पीरियड में अगर कोई ईओएल मांगता है कोई भी सरकारी कर्मचारी, तो वो नहीं दी जाएगी, ऐसा प्रावधान रखा गया है. इस लाइन को दोबारा से पढ़िए. हाउएवर, लीव रूल स्पेसिफिकली एक्सक्लूड द ग्रांट ऑफ ईओएल ड्यूरिंग सच नोटिस पीरियड. Therefore, this kind of leave cannot and should not be sanctioned concurrent with the period of notice for voluntary retirement. अगर आपने voluntary retirement का नोटिस दिया है और आप डिपार्टमेंट को ईओएल भी दे रहे हैं, तो वो कंसिडर नहीं होगा. तो नेक्स्ट पॉइंट इज द मैक्सिमम लिमिट. देयर आर डिफरेंट लिमिट्स फॉर डिफरेंट गवर्नमेंट सर्वेंट. टू द परमानेंट एंड द क्वासी परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट, इट हैज अ लीव ड्यूरेशन beyond 5 years and normally be granted to government servants. But in case of temporary government servant, it has different rules. Let's see, in case of permanent or the quasi-permanent government servant. Now, you may recollect the information condition that the leave beyond 5 years cannot normally be granted to the government servants. Subject to this condition, that EOL of any duration can be sanctioned to the permanent and the quasi-permanent government servants. In case of temporary servants or the temporary government servants, they do not enjoy the privilege like EOL leave, duration up to 5 years. In their case, the grant of this kind of leave is restricted and is dependent upon the length of service पे वो depend करेगी and the purpose for which it is required. So it has specific ground. The 3 month without linking it to the length of service, this leave is admissible with or without the production of medical certificate is also given. So there are different provisions. Temporary government servant who are suffering from
any of these ailments like TB, leprosy, cancer or mental illness can be sanctioned extraordinarily for 18 months only. अगर कोई भी टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो इन रोगों से पीड़ित है, जिस तरह से टीबी, लेप्रोसी, कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, कैंसर या मेंटल इलनेस, तो उस समय पे उस अवस्था में उसको सर्विस को प्रोटेक्ट करने के लिए ईओएल दी जा सकती है, लेकिन 18 महीने के लिए, वो भी तब इफ दे हैव कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ सर्विस। उसके लिए एक कंडीशन दी गई है कि 1 साल की रेगुलर सर्विस होना जरूरी है। सेकंड पॉइंट देखिए, व्हेन द टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट कंप्लीट 1 ईयर ऑफ सर्विस, they became entitled to EL of 6 months. However, this admissibility is only for the purpose of self-illness of the common nature. And they are required to produce the medical certificate also. अगर illness common nature की है तो medical certificate देना अनिवार्य है. While counting the completion of 1 year service, 3-month extraordinary leave will also count. Next point. The government servant who have completed 3 years of service can be sanctioned EOL up to 24 months for the purpose, especially for the higher studies also. And in this case, the sanctioning authority must satisfy that the higher study for which leave is sanctioned is in the public interest. जैसा कि हमने देखा स्टडी लीव के दौरान भी ये जरूरी है. So there are different provisions of EOL. So I hope this will give you a brief idea. तो आपको याद रखना है, जब भी लीव रूल्स आप एग्जामिनेशन में हॉल में लेके जा सकते हैं, तो लीव रूल्स में आपको बेसिकली ध्यान का रखना है, जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करें आपको इंडेक्स याद रखना है, और इंडेक्स के अंदर आपको ईओएल का कंटेंट याद रखना है कि कहां पे आप फ्लैग लगा सकते हैं. आप स्पाइरल बाइंडिंग करके एग्जामिनेशन हॉल में अपनी बुक्स को ले जा सकते हैं, ये अलाउड है. ईओएल आप ध्यान रखिए, तो कुछ प्रावधान है जो आपको ईओएल के तौर पे याद रखना है. तो आई थिंक दिस इज ब्रीफ आइडिया. थैंक यू ऑल फॉर पेशेंस लिसनिंग.